Let us look at another example on the meaning of income received or deemed to be received. Mr. Raju was a non-resident for Indian tax purposes. He sold his property situated in Singapore and credited the amount to his bank account in India. So here is a person, Raju, who is a non-resident for tax purposes. He had a property in Singapore, which he sold and credited the amount to his bank account in India. What I mean by credited the amount to bank account in India is that if he had one bank account in India, the buyer had sent the money directly to the bank account in India. Subsequently, such sale proceeds were transferred to his bank account in UK. Once the money was received, since this person was assuming living in UK, he decided that let the money move from India to the UK bank account. Whether such sale proceeds are taxable in India? What would be your answer? Here, if you see, where is the first receipt of income? The first receipt of income is in the Indian bank account, and it includes income taxable in India, right? So therefore, since the income has been first received in India, it will be taxable in India. The receipt of income refers to only the first occasion when the recipient gets the money under his control. The first occasion when Mr. Raju gets the money under his control was when such income was credited to his bank account in India. Such sale proceeds are taxable in India as such income is first received in India. Now obviously, if he is a tax resident of UK, he can always claim the benefit of the India-UK treaty. So, income deemed to be received in India, section 7. We said that in case of a non-resident, income received in India is taxable. Even income which is deemed to be received in India is taxable. Now, what do you mean by income deemed to be received in India? The answer to this question is given in section 7. Section 7 में आपको ये बताया गया है कि वो कौन सी income है which will be deemed to be received in India. Let us look at them one by one. Contribution in excess of 12% of salary to the recognized provident fund by the employer, or interest credited in excess of 9.5% per annum in a recognized provident fund. अगर आपका employer आपको एक recognized provident fund में participate करवाता है जहाँ पे वो provident fund में contribution करता है वो 12% से ज़्यादा है, then मान लीजिए आपकी salary 100 है, 100 का 12% होता है 12. अगर employer का contribution 12 या उससे कम है, then there will be nothing which will be deemed to be received. But if he contributes, let's say 14, then the difference between the two, which is 2, will be treated as income deemed to be received in India. And where does this happen? This will be typically applicable. Suppose there is a non-resident who has an employee. क्योंकि अगर रेजिडेंट है, एम्प्लॉय रेजिडेंट है, तब तो बात ही ख़त्म है, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल, मतलब जो भी रहेगा उसका प्रोविजन. बट इंटरनेशनल टैक्स के पर्सपेक्टिव से अगर एक नॉन रेजिडेंट है और उसका एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी पे ही इज़ लायबल टू contribute to the provident fund, then this provision gets triggered. Or otherwise, interest credited in excess of 9.5% per annum in a recognized provident fund. जो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है एक recognized provident fund पे, अगर वो 9.5% से ज़्यादा है, then it will be treated as income deemed to be received in India. Second is contribution by central government और अदर एम्प्लॉयर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयर अंडर पेंशन स्कीम ऑफ सेक्शन 80 CC D.
इस पर्टिकुलर पेंशन स्कीम में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता है फॉर द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉई, that is treated as income deemed to be received in India. And the third and the last, amount transferred from unrecognized provident fund to recognized provident fund. But how much? Only the employer contribution and the interest thereon. अगर आपका कोई unrecognized provident fund था, उसका पैसा ट्रांसफ़र होता है किसी recognized provident fund में, तो जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ उसमें जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपका $100 ट्रांसफ़र होता है, इसमें से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो है 50, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 10 और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो है 40. ऑल्दो आई थिंक दिस मे नॉट वर्क, आई एम जस्ट गिविंग यू नंबर्स बिकॉज जनरली ये दोनों बराबर होते हैं, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दैट वर द केस, then this 60 is something which is deemed income deemed to be received in India. Meaning of accruing or arising. Accruing or arising का मतलब क्या है? Accrue means the right to receive income. अब ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी टैक्सेबिलिटी जो इनकम की है वो accrual और arising और इन सब चीज़ों के ऊपर है. Accrue means the right to receive income. Due means right to enforce payment. Now you must be wondering what's the difference between the two. Let's discuss that. बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए एक पर्सन ने एक फिक्स डिपॉजिट किया 3 months का है, तो जो इस 3 months के पीरियड के बीच में सपोज इंटरेस्ट अक्रू होता है डेली बेसिस पे, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप हर रोज इसके पास जाएं और बोले मुझे पे कर दो. नहीं, इंटरेस्ट अक्रू हुआ है बट ड्यू नहीं है पेमेंट के लिए. मतलब ड्यू अगर आपने 3 महीने के लिए ये एफडी की है तो आपको पैसे 3 महीने बाद ही मिलेंगे. आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि दैट यू ब्रेक द एफडी एंड टेक द एंटायर मनी, बट इफ़ यू डोंट डू दैट देन it is due for payment only after 3 months. Mr. B has made certain fixed deposit of rupees 4 lakh on March 1, 2017 for 90 days. Same example. In this case, 1 month interest on fixed deposit will accrue on March 31, 2017. ये तो मंथली अक्रूवल है क्योंकि अकाउंट क्लोज हो रहा था तो वो बुक्स में अक्रू इसको कर देंगे. बट सच इंटरेस्ट इज नॉट ड्यू फॉर पेमेंट. आप उनसे जाके वो पैसा मांग नहीं सकते. वाई? बिकॉज इट इज नॉट ड्यू फॉर पेमेंट. सच इंटरेस्ट विल बी ड्यू आफ्टर 90 days. यानी आफ्टर 90 days you have a right to go and ask for the payment. That is what the difference between is. The accrual could be on a daily basis, periodic basis. I can say periodic is a better term because periodic में daily, weekly, monthly सब cover हो जाएगा. लेकिन ड्यू का मतलब ये है कि जब आप जाके वो लीगली पैसा मांग सकते हैं तब वो इनकम ड्यू होती है. एक और एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ के ऊपर. सैलरी फॉर वर्क परफॉर्म्ड इन नवंबर विल अक्रू थ्रू आउट डे टू डे. आप अगर 1 महीना काम कर रहे हैं रोज़ के रोज़ आपकी सैलरी अक्रू होगी, बट विल बिकम ड्यू ऑन November 30 और 1 December एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप एम्प्लॉयर के पास जाके उसको मांग सिर्फ या तो मंथ के एंड में सकते हैं या 1 December को सकते हैं, जो भी आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है. जनरली अगर आप देखें तो किसी भी कंपनी में आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर देखेंगे वहाँ लिखा होता है कि सैलरी विल बी ड्यू ऑन दिस वीक. ड्यू मतलब जब आप लीगली आके उनसे पैसे मांग सकते हैं. अगेन सेम कंडीशन हेयर भी ऑल्सो अप्लाइज कि आप बीच में छोड़ देते हो तो आप स्टिल यू कैन गो एंड आस्क देम फॉर पेमेंट, बट अदरवाइज the accrual happens on a day-to-day basis. The due thing will happen once this takes place. Now, another question which comes up is whether the income which has been taxed on accrual, can it be taxed on receipt? Just again, suppose
सेम एग्जांपल में आपको जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट का था, वहाँ पर आपका फिक्स डिपॉजिट 90 डेज का था। कुछ इंटरेस्ट आपका अक्रू हो गया मार्च 31, 2017 को, और बैंक ने आपका यहाँ पे TDS काट दिया, यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ये इनकम टैक्स हो गई अक्रूवल पे। अब ये ड्यू हुआ आफ्टर 90 डेज, लेट्स से मे को, आई एम जस्ट सेइंग मे 30 और 31 विच एवर दिस देयर, और मे 31 के बाद जब ये ड्यू हो गया तो आपको टोटल इंटरेस्ट रिसीव हो गया, including the interest which was due on March 31 and was taxed in financial year 16-17. तो क्या अब जब आपको मान लीजिए अगर सपोज टोटल इंटरेस्ट आपको 90 रुपीज़ मिलता है, जिसमें से 30 यहाँ टैक्स हो गया था, 60 यहाँ अक्रू हुआ है, तो यहाँ पे टैक्स 90 पे लगेगा या 60 पे लगेगा? इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए एक ये एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 5 है, जहाँ पर ये बोला गया है कि Explanation 2 to Section 5 makes it clear that once an item of income is included in the assessee's total income and subjected to tax on the ground of its accrual or deemed accrual or receipt, मतलब अगर एक बार आपकी कोई इनकम इंक्लूड कर ली गई है अक्रूवल पे, रिसीट पे या डीम्ड रिसीट पे, whichever might be there, it cannot again be included in the person's total income and subjected to tax either in the same or subsequent year on the ground of its receipt, whether actual or deemed. एक बार एक इनकम के ऊपर टैक्स लिख गया, दोबारा आप नहीं लगा सकते। The same income cannot be taxed twice. अब चाहे आपने अक्रूवल पे लगाया, डीम्ड अक्रूवल पे लगाया, रिसीट पे लगाया, doesn't matter. Second time when you receive it, it cannot be taxed again. Only the difference, which is 60 rupees in this example, can be taxed again. Mr. Mohit is working, let's look at another example to clarify this. Mr. Mohit is working as a lecturer in an Indian university. He is getting consulting income of rupees 50,000 per month. He has received consulting fees of 11 months from April to February during the previous year 16-17. यानी 16-17 में काम कितने महीने किया? 12 महीने। रिसीव कितने महीने का हुआ? अप्रैल टू फरवरी, 11 महीने का। The fee of March 2017 was received in the first week of April 2017. अब अप्रैल 2017 कौन सा फाइनेंशियल होगा? 17-18. While filing the return of income for previous year 16-17, he has shown total consulting fees of 6 lakh. उसने फीस कितनी दिखाई है? 6 लाख। 6 lakh कैसे आई? 50,000 into 12. So what he did was, instead of showing the income of 11 month what he received, he showed income of 12 month on accrual basis. What is the question? Whether fee of March 2017 was taxable in the previous year 2017-18 on receipt basis. ये बहुत ही सिंपल है। The fee of this 50,000 was included in the previous year 16-17 on accrual basis. It shall not be included again in 17-18 on receipt basis. There is another explanation which clarifies कि अगर कोई इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग है आउटसाइड इंडिया, बट एक कोई बैलेंस शीट इंडिया में बनाई गई, उसमें वो इंक्लूड करी है, तो कैन दैट बी कंसिडर्ड एज इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया? ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियरली प्रोवाइड करती है कि एन आइटम ऑफ इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया shall not be deemed to be received in India merely because it is taken into account in a balance sheet prepared in India. अगर अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है तो ऑब्वियसली टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, अनलेस वो रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो, राइट? इस पर्टिकुलर केस में आप एक्चुअली में रिसीव होगी तब तो ठीक है। अगर डीम्ड टू बी रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बैलेंस शीट जो इंडिया में बनाई है उसमें वो इंक्लूड हुई है, मात्र उस रीजन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू कैन नॉट कंसिडर इट टू बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया।